Hey guys, what's up? We're back with another episode of me, the podcast, and the boys. Hey boys, what's up? What's up? Yeah, Zoo. Hey. Whoop. I think everyone is just asking whoop. No one's But answering actually, what's up. ब्रो what? मेरे ऊपर तो मेरा कंबल। Oh, damn. मेरे ऊपर तो जो है ना, बस इमोशनल बर्डन पड़ा हुआ है। Oh no. मेरे Oh ऊपर no. तो मेरा खुदा है. Oh shit. Oh, Fawad, we don't care about whatever you say. अच्छा, so I moving wasn't on. even saying anything. Hey man, you can say anything. So anything you want. But you don't care, do you? Yeah, we don't care, but you can. I mean, you're part of the team, even if you like have zero value here or anything, but you're still part of the team, and we have to ask you as well. Okay, moving on. Uh, how was your week, everyone? And Fawad. Holy shit. Okay. जवाद भाई सबसे बड़े हैं, जवाद भाई बताएंगे इनका क्या। जवाब भाई बताइए आप भाई कहाँ से एक आया बैठे आई बैठे. थिंक आप जो हैं उन you're the only one who has a आप life. हम तो बस इधर आप ही बैठे रहते हैं हर टाइम. जैसे पॉडकास्ट की वजह से मेरे साथ ये आप और भाई भाई की रिस्पेक्ट वैसे नहीं होती. Right. The week Maybe. has been the usual. बस last week न्यू ईयर एंड क्रिसमस हॉलीडेज होते हैं यहाँ पे तो लास्ट वीक Oh, तो मैं ऑफ सीन था तो मोस्टली आई वाज जस्ट प्लेइंग गेम्स एंड चिलिंग studying a little bit did you but go out? not really, besides work I didn't really go out. I heard they give like randomly give sweets or like stuff Yeah, like that. yeah. Damn, I want to go to Germany as well. Man, not really. Not everyone on the street would give you that. If you're lucky, you might get it. Okay, where I used to work in my last place where I used to work, they would actually give out chocolates and stuff on Christmas and even like gift card, like 25 euro gift card. Oh, But man, this one does not. you're actually lucky because the last place I used to work on, they used to give candies and stuff, but they used to like not give holidays. So Damn. like at least Well, you're getting something. at least you got the candies though. I don't know what's better at this point. So how did you spend your week, Fawad? I Okay, was. Hassan, तुम्हारा कैसा? What? Hey. You asked me first. I better say Yes, something. yes, okay, bro. Sorry, go on. Okay, so I've been chilling at home, literally like, feeling free. Every time I feel bad, maybe I shouldn't like play a game or something. Then I realize, oh wait, I'm unemployed now. I'm not a student anymore. Uh, Congratulations on your graduation, bro. oh, but wait. Congratulations I'm on. not. I'm not unemployed either, am I? Certain Hmm. someone would like to say something about. Huh. जी, Hmm. किसी को जॉब चाहिए तो मेरे से राब्ता करें, मैं सबको जॉब Yes, दे रहा हूँ अपने। actually, Hassan has a lot of content writing jobs if anyone is interested. This is not a meme, this is actually serious. I repeat, this is not a meme. Now Right. it is because no one trusts you. It had. और Hmm. Hmm. ओके, मेरी बारी। Yeah. Yes. इट वाज अ डेड वीक क्योंकि माय हीरो का जो इंग्लिश डब था वो डिले हो गया था लास्ट वीक। तो लेमिलियन वाला एपिसोड अब आया था और तो मुझे जापानीज में देखना पड़ा और बड़ा अजीब लग रहा था। और उसके बाद मुझे और देखना था मांगा का क्योंकि मुझे पता था आगे क्या होता है। देन आई स्टार्टेड रीडिंग द और ये कर करके मेरा हफ्ता ही गुजर गया लिटरली। ओ बट आई गॉट माय टैबलेट और मैंने और Oh. बिल्ली ब्रो ने बड़ी हरामी ड्राइंग्स बनाई हैं। Hey man, don't expose us yet. हाँ मैं भी दिखाओ ड्राइंग. हेलो. नहीं, सीक्रेट है। नो नो. Secret. We'll ओ come नो. back as a duo artist Yeah. The team, heck. but not yet. Sure you. Actually, trio, if you know what I Hmm. mean. Yes, Billy bhai, मैं भी ready हूँ. Okay. Try Oh, out. speaking of being creative, Akash, you actually like talked about a story you were thinking of, like of us four.
What was it about? Like, Yeah, basically it started when Urva drew me as a comic book with the ultimate move, overthink. So I thought, okay, what if all of the boys were actually superheroes and all of our superpower? This is basically like my heroes से inspired हुआ है. So what if uh, all of our quirks were just incredibly mundane things that say something about us? जैसे मेरा overthinking है. Jawad can copy everybody's catchphrases, so Jawad will have some sort of a copycat power. Kakashi. Kakashi. Fawad, imagine me having the sad, the big big sad, sad. he can make people around him. And Fawad, क्योंकि फवाद बहुत slow है, तो he can slow everybody else's thinking capacity around him. Oh, that's actually Oh, very helpful. बहुत But वैसे strong quirk है. it has drawbacks as well because Fawad wouldn't know when to use it. So if we Hmm. needed like 10 minutes early, and later we have to tell him 10 minutes earlier to actually use it. The point 'Cause- is, it's still very powerful. Would you actually know that you're using your quirk because now he's slow? that's Hmm. we have to ask the writer then. Hmm. Does Bro, what's the Hmm. question? Would okay? Fawad Would know that he is using his quirk because he's slow? Like mentally slow? Wait. Hmm. Yeah, Okay. that's a good plot point. Yes, like there could be like a chapter or a small little arc where Fawad gets his quirk, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा कि like everything around him, everyone goes dumb, and the second Fawad realizes everyone is dumb, they're back to being smart again. So, and now that's how that's he you can kind of add some character development or something like an ultimate move where Fawad Mm, actually knows what he's doing. but this is based on reality, bro. ये असल में तो कभी नहीं होना. Wait. True, true, not false. Yes, Like, I would complain, but there isn't really much to complain about. The sun is pretty much right. you would So probably complain about this in like eighth or ninth episode because that's how long it takes you to process it. देखो. Oh no. Okay. खैर Okay. खैर हम बस 8th या उसे 9th एपिसोड में देखेंगे. सबको ना बताओ I'm going to keep this under wraps, लेकिन I'm thinking कि ये एक comic book style manga style चीज हो. That's why I'm learning to draw so that me Oh, and Bilal can draw. yeah, I can draw Hmm. backgrounds for you and you can draw the character. And That maybe I can draw Kazumi. Kazushi. अबे कसूमी से याद है आजकल टेकन बड़ा चल रहा है पाकिस्तान. Oh yeah, Tekken and actually esports grew a lot in the past like 2 years in Pakistan. Dota, Hmm. CS:GO, but there is, I mean, with Tekken we actually had Arslan Ash owning the whole world, and there are other games like Dota, CS:GO, but the Dota scene is way ahead. Like the whole world is way ahead Pakistan right now, and there isn't anything revolutionary left to do in. Like we had two It times TI champion, we already got that. We had like back to back champions, we got that as well. So isn't Dota there is, dying? yeah, it is dying as well. And CS:GO, not many people play, especially since the Valve is just so bad and just uninterested in their own game. So about Tekken, what are your opinions? How did like Yeah, टेकन इज लाइक पाकिस्तान में ना. मैं लाइक बचपन में जब जाता था अपने कजिन्स, तो उधर हम लोग टेकन 3 खेलते थे और आई थॉट कि ये सिर्फ हमारी ये गेम है जो सिर्फ हमें आती है खेलना. मेरे को 6-7 साल बाद आके पता चला कि लिटरली आधा पाकिस्तान टेकन खेलता है. और जाहिर सी बात है, द मोर यू प्ले द बेटर यू गेट एट इट. तो जब इंटरनेशनल टेकन इंट्रोड्यूस हुई, उस वक्त पाकिस्तान का किसी कहीं नाम ही नहीं था. लेकिन पाकिस्तानी इतना खेलते थे टेकन कि वो उन्होंने एक अपना एक स्पेसिफिक एक्सपर्ट्स का ग्रुप बना लिया था जो आपस में खेलते रहते थे, जिनमें अरसलान है,
हीरा मलिक है मेरा फेवरेट स्टीव प्लेयर जो है हीरा मलिक, द जॉन John और Key वगैरह Charger. वगैरह, द की चार्जर जॉन। The key charger. तो लिटरली एक मौके की जरूरत थी पाकिस्तान को, और जब अरसलान ऐश ने वो मौका दिया तो लिटरली फट गया है पाकिस्तानी सीन पे। लेकिन लाइक हाँ, टूर्नामेंट एक्सपोजर नहीं है बॉयज का इतना, इसलिए ये हार रहे हैं प्रेशर की वजह से। क्योंकि आप इनके मूव्स देखते हो लैन पे और टूर्नामेंट्स में तो काफी डिफरेंसेस नजर आते हैं, काफी वो लगते हैं स्ट्रेस्ड आउट। तो यूज्ड टू खैर नहीं दैट्स है। गोइंग टू इम्प्रूव। हम्म। हाँ वाकई सही बात है, like there are so many people just watching you, they're cheering you up and stuff, and it gets really like pressuring as well. Yeah. Plus, like people in Pakistan actually have like every country has their own play style on how they play Tekken and everything, and people adjust. Like Pakistani players have their own style, and they're unaware. They can watch videos and stuff, but unless they play against other countries, they won't know how good or how different their style is to, and that's how Pakistan was. That's why there were many players coming to Pakistan to play against the Pakistani players to learn their style. Hmm. Recently, the one of the greatest players of Tekken, Nee, came over to Pakistan and played a lot. तो I वहाँ मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बोले देखी थी टेकन 7 के ही इस बारे में कि they talked about Pakistani Tekken is slightly different than the world is used to playing because पाकिस्तान में इतना exposure था it's नहीं है। like it's like football. There is a difference between an actual football game and urban style football. Like there are no Hmm. rules. Basically, you can play however you want. हम्म, That's basically how Pakistani Tekken is. We play the urban. No one, half of the people who probably are like god tier players in Pakistan, but they don't know that they are. Because like they're just playing good, they're winning, they don't know if they're good or not. Because like there is no level or competition, or people don't get that exposure. सही And है। that's pretty much how the esports and Pakistan scene is. Like we actually हम्म, need some, like every sports has their own association. यस अपना चैनल भी Esports, होता है ज्यादातर। हाँ, लेकिन esports, पाकिस्तान में जब तक ये स्टिग्मा खत्म नहीं होगा कि गेम्स में कुछ भी नहीं रखा हुआ, तब तक इसी तरह चलता रहेगा। and the games और are just a waste of time. हम्म, और इमरान खान को कोई बताए ना यार, इसमें बहुत टैक्सिंग अपॉर्चुनिटीज, बहुत टैक्स है इसमें। ओ भाई कुछ ज्यादा टैक्स हो जाएगा। भाई लिटरली बाहर से लोग अंदर आएंगे टैक्स लेने, टैक्स देने। हाँ, कसम से। वैसे इन दैट रिगार्ड्स अगर देखो तो मतलब टेकन 7 की काइंड ऑफ एक रीजन ये है कि पाकिस्तान में इतनी ज्यादा मतलब बढ़ी है। उन्होंने को एटलीस्ट उन्होंने खुद बताया था कि कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पाकिस्तान में थोड़ी गुर्बत ज्यादा है ना। एटलीस्ट तुम ये देखो कि लाइक देसी गांव वाले लोगों से ज्यादा मतलब स्कोप हुआ है। द पॉइंट इटसेल्फ आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज कि उन्होंने यहाँ पे कॉइंस वाला सिस्टम रखा है, राइट? एवरीवन गेट्स लाइक टू यूज कॉइंस। कॉइंस कॉस्ट मनी हाँ, एंड पेरेंट्स भी एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी ही देते हैं ना, पैसे देते हैं लाइक कि आप इतने से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते। तो यही बता रहे थे कि वो यही चाहते थे कि लाइक दे बाय वन कॉइन लाइक एंड दे गेट टू प्ले फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल। तो एक काइंड ऑफ ड्राइव, एक सिंपल सी मोटिवेशन थी, लेकिन जिसमें apparently it worked out better than more what other people are trying to do in the rest of the world. हाँ, Consoles इसलिए probably console players या PC players इसलिए जब पीछे रह गए हैं, you know, compared to arcade players original। हाँ, ये भी है कि like the availability was a lot more than the PC or console games, हाँ I guess. Because I remember back when I was kid, not like saying anything or like मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन आई यूज टू प्ले एट द आर्केड नियर माई हाउस। तो वहाँ पे जो है मैं एक कॉइन लेता था, और वो ना मुझे कहते थे कि तुमने ना इसमें सिर्फ 5 राउंड खेलने हैं, क्योंकि आई यूज टू जस्ट कीप ऑन प्लेइंग प्लेइंग प्लेइंग, आई वाज काइंड ऑफ गुड एट इट, नॉट वुडंट से आई वाज वेरी गुड, लेकिन ये है कि मैं काफी लाइक हारता ही नहीं था, एंड देन आई यूज टू कीप ऑन प्लेइंग जब तक वही टोकन चल रहा होता था। उसने कहा था कि नहीं, तुमने जो है ना हर
5 राउंड या 10 राउंड के बाद ना नया टोकन टोकन लेना, वरना तुम्हें खेलने ही नहीं दूंगा। ये भाई ना फ्लेक्स अपना डालना चाह रहे हैं बीच में बड़ा, वो भी आसान लेवल पर अगेन है। आई सेड मैं फ्लेक्स नहीं था करना चाह रहा, लेकिन पर फ्लेक्स कर रहे फ्लेक्स हो गया लेकिन। मैं फ्लेक्स नहीं करना चाह रहा बाय फ्लेक्सिंग। हैं। ओके। तो एनीथिंग एल्स एनीवन वुड लाइक टू ऐड के हमारे वैसे पाकिस्तान में जो है वो काफ़ी अच्छे प्लेयर्स हैं, लाइक इंटेलिजेंट इवन सिर्फ ई स्पोर्ट्स या इस तरह की चीज़ें, काफ़ी स्पोर्ट्स में जो है हमने बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस लाइक इन क्रिकेट एज वेल, इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट जो है ना हम्म, हमारे क्रिकेटर्स ने अर्न की है, दे वर लाइक अमेजिंग बॉलर्स, बैट्समैन एंड एवरीथिंग, एंड द होल वर्ल्ड एक्चुअली रिस्पेक्ट्स दैट। वो तो अब हमारा ज़रा जो है ना, हमें ज़रा लेज़ीनेस की आदत पड़ गई है, और अ, हमारी जो है वो क्रिकेट भी इवॉल्व होती है, जैसे बाकी सारा कुछ होता है, क्रिकेट भी इवॉल्व होती है। तो वो हमारे जो प्लेयर्स हैं ना, वो उनको सिखाने वाले वही 20 साल 25 साल पुराने प्लेयर्स हैं, हम्म, जो ना खुद इवॉल्व हुए थे, रिटायर हो गए हैं वो, और वो उन्हें सिखा भी वही रहे हैं, तो दे आर नॉट एग्ज़ैक्टली लाइक इवॉल्विंग। द यंगर प्लेयर्स आर नॉट गेटिंग दैट गुड एट right. द स्पोर्ट्स दे प्ले। खैर वो तो इट्स अ डिफरेंट टॉपिक, लेकिन बैक टू लाइक ई स्पोर्ट्स इन पाकिस्तान। तो पहली तो बात है कि इवन इफ यू, हाँ ये है कि अगर आप प्लेटफॉर्म बनाओ तो मे बी पेरेंट्स वुड एक्चुअली लाइक अंडरस्टैंड, लेकिन यहाँ पे तो यही है कि डॉक्टर बन रहे हो तो बस सही है, उसके अलावा तो भाई तुम फेलियर ही हो। इंजीनियर चलो थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट मिलती है, लेकिन इंजीनियर को रिस्पेक्ट ही मिलती है, जॉब तो नहीं मिलती। We have Exhibit A with us, Hasan. आउच आउच। देखो देखो, लुक लुक, मुझे रिस्पेक्ट भी मिली है, मुझे जॉब भी मिली है, सही। वो अलग बात है, इंजीनियरिंग की वजह से नहीं मिली, लेकिन मिली। वो सारे और स्किल्स की वजह से, और ये तुम जो है ना वो इससे बेहतर पोजीशन पे होते इफ यू खैर, you everyone needs education and should get education. It's not just about learning, it's about many other things that actually come along with learning. Oh no, Bilal Along with it, disconnected. like नो, Welcome back. फिर मैं आ गया। वापस आ did I गए. disconnect? Yes. अच्छा फिर आ गया। Where was I? इन योर रूम। ओह माय गॉड। That's my, oh my God, I was holding myself so much to not make jokes like this, and then there's this guy, this blue. Even though there is no hate for blue anymore, we just hate Fawad now, but still, why? Hell, you can say whatever you want. It's not like anyone would pay attention to you. I'm just not one of us, but people would probably. May I really would stop if Fawad became the audience favorite. Mark my words right He here. will actually. He might actually. Oh, क्योंकि shit. वो I can already see the biasness in this squad, in this group right now. नहीं ब्रो, एवरीबॉडी लव्स फवाद, एवरीबॉडी मेंटली हैंडिकैप्ड दैट इज। yes, 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 Okay. yes. Not gonna lie, he do be stating big facts here. Okay, go back to the topic. Go back to the topic. So that's pretty much it. It's like What's pretty uh, much pretty much it? as I was saying that parents won't ever come to terms with you playing games. Like Hmm. they can, you can try. I guess out of like only probably 1% of the parents would actually agree to let you pursue this career. It's like the competition is very big and it keeps growing. You have to, you're not just doing, sometimes when you're doing a job or something, you're not competing, you're just doing work. But in this Hmm. sports and everything, it's different, especially in esports, because new people can easily come on the platform and they just take you over any day. And you're like, What just happened? it's what? What just happened? Someone just took over. Oh हाँ, अच्छा you were talking about that. मैंने Yeah. कहा पता नहीं क्या कह रहे हो. I was like, did I disconnect again?
Right. Availability. But adding on to that point, like I don't, you're right कि ये at the moment parents का नहीं मानेंगे, but I think it's more of a responsibility of our generation, right? True, के true. हाँ ये है के कि to educate them about this. Yeah. no, that's not what I Mhm. meant. That's not what I meant. Mhm. It falls onto us that we let our children do stuff which we actually wanted to do. I हाँ, mean, that's actually a good point. And हाँ ये पहले जो I'm not gonna shade on any parents or any generation, hmm, but like uh the thing is that sometimes there are things that happen to us and we just instead of like putting a stop to those things we actually like do those things to other people as well, and eventually the cycle just keeps on repeating and it goes on instead of Mhm. like someone just stopping the cycle. And I think hmm, we as a younger generation should respect this and actually like let people or our children do what they want to do hmm. and support them however we can, and we shouldn't do what was done to us that we didn't like. Like, And hmm. I wouldn't put up a go moral argument in that regard, but uh, yes. okay, when अच्छा, I was so young, can I हाँ, wait, wait, okay, sorry, never mind. Go on, go on. when I was young, okay, the first time I used a PC when I was in my like fifth grade, and I used my brother's computer. Then I actually got hooked into gaming from there. So I don't think in most of my life my parents actually had any interaction with a computer at all. So I can't really blame them for not letting me do something which they were unfamiliar with. So Yeah, Okay. there is that kid, you tend to be scared of something you don't know. So why would you let your own children do something which you don't know? actually parents these days are actually aware that people or their children do need the computer to actually Yep. like in in their studies and everything. And uh, it's a good thing that they know, but some children बल्कि many children actually abuse this Hmm. benefit. और वो जो है ना वो कहते हैं कि मैंने ना C प्लस प्लस के प्रोग्राम बनाने हैं, मुझे 1080 Ti और पता नहीं क्या कुछ लगा के दो, and they will just make a list. ओए हेलो हेलो, मुझे एक्सपोज ना करो, मुझे एक्सपोज ना करो. अब तो हो गया है, ये तो होगा. ये तो होगा. ये तो होगा, ये तो होगा. Right. Yeah. खैर Akashi तो boy wants to say something. go on. तो खैर, I just want to play devil's advocate for a minute क्योंकि like you guys put up good facts, लेकिन अब आप एक पेरेंट की हैसियत से देखो ना. पहली Hmm. बात तो ये है कि हम पाकिस्तानी हैं, सही है. तो Hmm. जो ऑप्शंस बाकी दुनिया के पास है वो हमारे ऊपर इतने ओपन नहीं है क्योंकि हमारी सोसाइटी एक स्पेसिफिक कल्चर से कंफर्म करती है. तो True. इस Okay. कल्चर के अंदर रह के ही ना हमने कुछ सेट ऑफ सक्सेस के हमने कुछ वो बनाए हुए हैं Hmm. प्रीरेक्विजिट्स. अब वो है एक डिग्री लेना. डिग्री के बाद आप जॉब करते हो या मास्टर्स करते हो या पीएचडी करते हो, टीचिंग करते हो, कुछ भी करते हो, लेकिन आप एजुकेशन कभी नहीं छोड़ते अपनी. क्यों? क्योंकि सिंस वेयर इन अ डेवलपिंग कंट्री, तो जब हमारे पेरेंट्स थे तब आज़ादी हुए हुए मतलब लिटरली 1-2 साल हुए होंगे या 10 साल हुए होंगे. तो उस वक्त नहीं नहीं सॉरी, उस वक्त खैर जो पाकिस्तान को ज़रूरत थी उन्हें इंजीनियर्स और डॉक्टर्स की थी. Hmm. तो उस वक्त जो इंजीनियरिंग और डॉक्टरी करता था वो उसको जॉब आराम से मिलती थी और वो करता रहता था, पैसे कमाता रहता था. लेकिन अब जो है वक्त चेंज हो गया है. Hmm. बट इवन दो द मोर थिंग्स चेंज द मोर दे रिमेन द सेम. अब पाकिस्तान दुनिया सारी बदल गई है, पाकिस्तान अभी तक अपने उस बबल में है. और इस बबल को अब ये कोई एक फ्रैजिल सा बबल नहीं है. दिस इज अ वेरी हार्ड बबल टू गेट आउट ऑफ क्योंकि आप हजारों स्ट्रीमर्स होंगे पाकिस्तान में.
उनमें से आप मुझे मिथिका को हटा के, इंजीनियर बनी को हटा के और किसी का नाम बता दो। किसी का पता है आप लोगों को नाम नहीं, स्ट्रीमर्स का? आई डोंट नहीं इवन नो पता कि ना? भाई पाकिस्तान में स्ट्रीमर्स भी हैं। वही ना, अब पाकिस्तान में इतने स्ट्रीमर्स हैं, किसी को पता है? उनका नहीं पता। वो स्ट्रीमिंग किस लैंग्वेज में करते हैं? ज़्यादातर उर्दू में करते हैं या उसमें करते हैं इंग्लिश में थोड़ी बहुत। जो इंग्लिश व्यूअर्स हैं वो देखते हैं ये ब्राउन बंदा है, वो वैसे ही नहीं देखते, उनके पास अपने फेवरेट्स होते हैं। और जो पाकिस्तानी होते हैं, हम वैसे खुद नहीं इतना देखते क्योंकि हम लगे होते हैं कि हम खुद। तो पहली तो हमारी टारगेट डेमोग्राफिक बहुत ही वेवर करती रहती है। अब अगर एक पेरेंट ऐसे देखेगा कि मेरा बेटा पढ़ाई नहीं कर रहा जिससे हम सक्सीड, जो हमारे लिए सक्सेसफुल थी, और ये वीडियो गेम्स खेल रहे हैं जिसमें टू बी ऑनेस्ट 0.1% चांस है सक्सेस का टू बी अ प्रोफेशनल गेमर। हम्म, इंटरनेशनली शायद 1% हो, लेकिन पाकिस्तान में बहुत कम चांस है। तो सही। इसलिए अगर पेरेंट देखे तो ही इज दे आर ऑब्वियसली गोइंग टू बी वेरी बायस्ड अगेंस्ट गेमिंग। कि हम्म, करनी है तो कर लो थोड़ी बहुत कैजुअली, लेकिन एज ए करियर अपने ट्रैक पे रहो। अब जैसे मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, मुझे तो सही लग रहा है फिलहाल, लेकिन वैसे मुझे भी कभी कभी ख्याल आते हैं कि यार देखो मैं कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट काम कर रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट मेरा ख़त्म हुआ तो फिर मैं आगे किस चीज़ के ऊपर सपोर्ट करूँगा? हमारे पास कोई वो नहीं है, फाइनेंशियल कवर, फाइनेंशियल नेट नहीं है हम्म, जिस पे हम रिलाई कर सकें। तो इसलिए ज़्यादातर लोग ये चीज़ों पे नहीं जाते। हाँ, maybe we actually do like did put up a very good and valid point. मतलब ऐसे ही, मतलब मैं पॉइंट्स को ही कंटिन्यू करना करूँगा, इसी का मेरा सेम सिमिलर पॉइंट ऑफ व्यू है कि नॉन एकेडमिक आप अगर करियर्स में जाते हो ना मोस्टली, तो देन मोस्ट केसेस में आपको बहुत अच्छा होना पड़ता है उस फील्ड में, राइट? हम्म, अब आप फॉर एग्जांपल आप गेमिंग को फिलहाल, गेमिंग पे मैं आऊँगा भी, लेकिन आप स्पोर्ट्स को देखते हैं, हम क्रिकेट की बात करते हैं। क्रिकेट, आप इंटरनेशनल क्रिकेट के अलावा, मतलब चलो इंटरनेशनल क्रिकेट हो गई और आपकी जो लीग्स हो गई, लेकिन वो भी इंटरनेशनल क्रिकेटर्स ही मोस्टली खेलते हैं। तो उनके अलावा कौन मतलब सक्सेसफुल है? आपकी जो डोमेस्टिक क्रिकेट पे खेल रहा है, बड़ी बड़ी अवाम खेल रही है, बट दे नॉट रियली मेकिंग एनफ मनी जो अपना घर भी बंदा चला सके। अगेन हाँ, आप किसी और स्पोर्ट्स में खेलो, फुटबॉल खेलो, लाइक इतनी ज्यादा लीग्स हैं, हमें से प्रीमियर लीग और ला लीगा का पता होगा, या लीग वन जो फ्रांस वाली है, और भी लीग्स हैं। गेमिंग में भी इसी तरह, हम पाकिस्तान में बैठे हम सुमैल की बात करते हैं, भाई कितने और सुमैल हैं? सुमैल ने तो पैसे कमा लिए बिकॉज़ ही वाज़ दैट गुड, ठीक है, वो बहुत अच्छा प्लेयर है ना। हम्म, अरसलान ऐश बहुत अच्छा बंदा है। ये 5, 6, 8, 10 बंदे जो है पाकिस्तान में टेकन में, ये बहुत अच्छे हैं। कि पाकिस्तान कोई 20 करोड़ से ज़्यादा की अवाम है, 20 करोड़ क्या, 1 लाख भी इतना बंदा नहीं होगा पाकिस्तान में जो इतना अच्छा हो, सही है। हम्म, आप इतने अच्छे नहीं हैं, यू आर नॉट गोना मेक इनफ मनी। आप स्ट्रीमिंग में, तो पेरेंट्स आर राइट इन दैट रिगार्ड्स, राइट? एटलीस्ट आपकी अगर एजुकेशन बेस्ड जॉब है, आप कहीं न कहीं फिक्स हो जाएँगे, आपकी जॉब लग जाएगी, आप स्टेडी स्ट्रीम ऑफ इनकम करेंगे। हाँ, राइट। और एक और रीज़न जो है पाकिस्तान में, जो आप देखो ना गेमिंग का, बेसिकली इसी का कंटिन्यूइंग है। हाँ, पाकिस्तान में ये नहीं है कि सिर्फ़ पाकिस्तानियों को एजुकेशन पसंद है, जो है बाय द वे, बट एनीथिंग जो व्हिच मेक्स यू मनी, राइट? आपका वो हो जाएगा, दा उसका नाम हो जाएगा। कुछ भी हो, भले कुछ भी नहीं हो, भले आप गेमिंग में ही कर रहे हो। आप अपने घर में बैठ के अगर आप ला रहे हो ना, कि लाख 2, 3, 4 लाख ला रहे हो, ठीक है। आपके पड़ोस वाले अपने बच्चों को कह रहे होंगे, देखो ये कर रहा है, इतने पैसे ला रहा है। ये बेटा, ये देखो उसका बेटा पबजी खेल रहा है, वो 5 लाख रुपए महीने कमा रहा है, तुम पबजी में कुछ क्यों नहीं कमा रहे? तो पॉइंट इज़ के, ये भी है। हाँ, इफ यू कैन मेक मनी ऑफ ऑफ इट, अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी, कि आप अपने लाइक घर चला सको अपना, लॉन्ग टर्म के लॉन्ग लिए। टर्म लॉन्ग टर्म प्रॉपर स्टेबल इनकम कर लो अपनी, तो फिर आपको कोई नहीं रोकेगा। बट हम्म, जब तक आप ये कर सको तब तक कोई इतना स्कोप नहीं है, और ये जेन्युइन बात है, देखिए ये गलत बात नहीं है। पेरेंट्स के हिसाब से देखा जाए तो इट्स नॉट हाँ। रॉन्ग, बहुत हो सकता like I have a question for you, Fawad. है। तुमने हाँ, you mentioned के anything outside of academic field, right? उसमें हाँ, यानी कि you have to be exceptional. यस, मोस्ट Uh, केसेस में एटलीस्ट। yeah. Would that include art as well? वुड दैट इंक्लूड आर्ट? Hmm. यार आर्ट का थोड़ा मसला हो जाता है, क्योंकि अब मैं इस पे ज़्यादा ओपिनियंस नहीं लिखती क्योंकि मेरी एक्सपर्टीज़ में नहीं आती। Hmm. पर आर्ट बहुत और सब्जेक्टिव तो सी चीज़ हो जाती है ना। तो गेम में भी नहीं, एक्सपर्टीज एक नहीं है सेकंड, वैसे नहीं, तुम्हारी। नहीं, 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 तुम तो नहीं गेम में भी है। बड़े बुरे हो। बट एटलीस्ट देखो, गेम में एटलीस्ट खेलनी तो है ना भैया, मैं देखी है। अब देखो Hmm. आर्ट का एक सिंपल सा सीन बता रहा हूँ, सही है? Okay.
तुम क्या करो कि जिस तरह बिली भाई हैं और हमारे पूरी आर्ट कम्युनिटी जिस तरह चल रही है ना, सही है, Hmm. वो दे आर वर्किंग रियली हार्ड, सही है, एंड दे आर मेकिंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, सही है, बट लाइक जितनी मेहनत करनी पड़ती है उस काम के लिए देखा जाए, एनिमेशन कर लो, तुम्हारी डिजाइन कर लो, बहुत कंपैरेटिवली इतना नहीं होता ना, इट्स काइंड ऑफ लेबर इंटेंसिव हो जाता है। Hmm. However, तुम फॉर एग्जांपल यू ड्रॉ, अब अगेन इसीलिए मैं कह रहा हूँ सब्जेक्टिव है, यू ड्रॉ अ लाइन ऑन अ ब्लैंक कैनवस, ठीक है, Hmm. और तुम किसी मिलियनेयर या बिलियनेयर के सामने वो चीज रख दो जो अपने आप को ना वो आर्ट कॉनसिवर समझता है, बड़ा सही है, और वो ना उससे किसी याद हो ये इस बड़े आर्टिस्ट ने बनाई है और तुमने इसको नहीं सुना, एंड कोई आर्टिस्ट नहीं है लिटरली, मैंने एक लाइन डाल दी होगी लाइक ग्रेट फवादीनी समथिंग इसने बनाई है ये, वो Oh. बंदा लाइक कोई मिलियन 2 मिलियन 3 मिलियन समथिंग वैल्यूएशन लगा के खरीद लेगा, स्कैम हो जाएगा है, Hmm. तो इसलिए हाँ, वैसे that's I it. agree with Fawad, and it's not just in Pakistan. Art or Hmm. writing or any creative kind of thing that you do is a big struggle. You have to spend years practicing art, practicing writing to actually become good at it. Some people are actually very talented and they learn easily. Lekin you have to practice a lot to for a book writer or anything. Like Akash can write very well, and he probably read so many books or like did research on how to write everything, and he knows now. Same goes for art. I've been drawing for a very long time, and I still think that I'm not even like 10% there where I want myself to be. Hmm. And it's basically a struggle. And with in Pakistan, it takes like you can't get exposure that easily in Pakistan. 'Cause people are actually very petty as well. Same. And again, like uh, I'm not exactly sure about writing क्योंकि उसमें थोड़ा different dynamics होते हैं, लेकिन यही है कि either you practice a lot, like you draw every day, and you'll probably get better. Like consistency is a good thing, and you need years of practice and all that. तो Hmm. आर्ट में जो है हर जगह पे रिस्क ये होता है कि you either succeed, you actually like practice so much that you actually like get the exposure from the whole world. वो बहुत रेयर होता है। पुराने जमाने में भी यही होता था, लेकिन उस टाइम लोगों को आर्ट एज समथिंग टू एडमायर इतना नहीं था। जितने भी अच्छे आर्टिस्ट हैं, they weren't really successful in their life. They probably were after they died. Like people started acknowledging how good their art is, और तब तक वो बहुत देर हो चुकी थी. They probably were dead or just killed themselves, like Vincent Van Gogh. Don't Oh. make a joke. Whoever made the joke on Vincent Van Gogh is going out of this call. Uh, so it's basically art is a struggle overall everywhere. Art can be of any kind, like writing, poetry, and so, but it's a good way. Like it makes you happy, and if you're passionate, you can make a lot of money in that as well. It's a good career choice as well. But then again, you have to do a lot of struggle. Fawad Hmm. is right about the academic side because we actually struggle a lot in that as well, but we don't really like notice that because we've been studying for 16 years to Yeah. get here. And that's 16 years of struggle, Hmm. which we usually don't think that it is because everyone does it. Not everyone does the same struggle in art or other things. So that's why we see art or writing or poetry or other stuff something different from the academic things. And artists can get jobs as well. Programmers can too, engineers can. Actually, they can't. Ouch. And I guess that's pretty much what I think. Does anyone else want to add anything? Not really, but you're basically a masochist. So you struggle for 16 years and then you want to do art as well, so you struggle more. Why would you want to struggle more? Oh yes, I was struggling for 16 years twice. Like I was doing Wait. art and doing my degree as well all together. It's not like I started now. I was doing it for a very long time as well.
because I actually did degree in programming because that was one of the other things that I thought I was good at, even though I wasn't. But I kind of was confident. So Hmm. I was like, I'll probably never be good at art because there are very few people you can actually get help from. Online help isn't as helpful as someone who actually teaches you face to face or one on one. So I was like, I'll never be this good, so I don't have to pursue this. I can just go for something that I'm also very comfortable with. And that's how I actually came into programming. Right. So that's pretty much it. Also, we'll talk about Hassan's story more in the next upcoming episodes. He'll have more details and stuff to add. Maybe he'll read out some of the parts of a chapter or something and keep us updated. And we'll talk about more. Just मे uh, बी अगले पॉडकास्ट में चीफ गेस्ट शेख रशीद हो, कुछ कह नहीं सकते, You खुद भी never know, you दिखाएगा। man. never know. You never You know. never know. Because I don't think शेख रशीद होगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि इमरान खान जरूर होगा with the amount of like stuff that Hassan is doing. तो कहना कि वही Tax हमने exactly recover, out. सीएस2 tax में recover. बहुत टैक्स लिया है, वैसे हमने सीएस2 में बहुत बड़े टैक्स लिया वो है। एकदम सब से पता हमारे है डिस्कॉर्ड में आएगा और बोलेगा टैक्स निकाल ले. टैक्स। So yeah, uh, ओके, it was nice talking to you guys. I hope you join us in the next episode as well. Till then, take care. Goodbye. Love you guys. And what's up? ज़ूप। Okay, बस कर दो.